Corbett National Park nestles on the foothills of the Himalayas in Uttar Pradesh. Situated 128 kilometers short of Nainital, it is India's first national park. The park stretches over 500 square kilometers of dense forests of sal and grasslands. I have visited the park many times, but the magic still holds. Each visit, I see a new dimension of Jim Corbett, the man behind and the park he created. Jim Corbett was the son of the postmaster of Nainital. Jim was addicted to shikar from age 10. Once on shikar with 3 army officers, they came upon thousands of waterfowls. Firing started indiscriminately, and in minutes, 300 fowls lay dead. From that day, Jim developed an aversion to this type of shikar. The waterfowl may taste delicious, he ruminated, but what would the hunters do with 300 birds? Why then did they take life so ruthlessly? Couldn't their senses distinguish a lake from a battlefield? Jim resolved never to kill a beast without adequate reason. The trigger will be pulled only to enjoy a delicacy or to destroy a dangerous beast. That day, Jim was transformed from a destroyer to a protector of wildlife. Jim was convinced that no jungle beast was dangerous while it lived in its natural habitat. Gora Sadhu to the villagers of Garhwal and Kumaon valleys, Jim considered it his sacred duty to kill man-eaters, a duty he faithfully carried out till his last days. In 1936, the Haley National Park was established near Ramnagar, a project in which Jim had a major hand. After independence, it was renamed Ramnagar National Park. Later in 1956-57, the state government gave it its present name, Corbett National Park. The park is an integral part of Project Tiger and has about 100 of the endangered Bengal tiger living inside. Looking out for tigers while perched on top of an elephant, taking you into thick forests is by itself a unique experience. Sounds of sambar deer calling with short nervous barks indicate the presence of a tiger in the vicinity. The first time I saw a tiger from atop an elephant, my hands were trembling while I tried to shoot with the camera. Though I knew that to the tiger, a human on an elephant is merely an appendage atop an animal too large to kill. The roar of the tiger made me freeze with fear. As I zoomed in those strong jaws and broken stripe pattern, I was filled with a great sense of wonder and admiration for the supreme predator of the jungle. When you spot a tiger in Corbett, an increasingly rarer species as years go by, the excitement in the air is infectious. Even families of mahouts troop in to take a peek. The expectant look on the photographer's face contrasts with the pure joy of the mahout who first spotted the tiger. The population of tigers is dwindling
due to poaching during the off-season periods of July to December. Poachers take away more than the animals. They undermine an already precarious natural balance. They take beauty and leave only waste. There are other dangers too. Forest fires can destroy the tiger's habitat. This picture of Mota Sal is a reminder of the fire of 1980, in which close to a quarter of the forest was destroyed. Though Corbett is promoted as a tiger reserve, it has a rich abundance of other wildlife and birds which attract the wildlife lover. The rare fish-eating, long-snouted gharial can be seen basking along the sandbanks and pools of the Ramganga River. I did not know there were so many species of deer in India till I spotted the variety in Corbett. The chital or spotted deer appeared almost all around. Sambar deer is also easy to spot. The hog deer prefers the thick undergrowth of elephant grass. Bird life is also in abundance, with rare birds coming into view to the delight of bird watchers. Corbett is home to 580 species of birds, including waterfowl, woodpeckers, raptors, pheasants, etc. A typical day at Corbett starts with an elephant ride, followed by hot parathas while watching monkeys sunning themselves just outside the dining hall. During the day, you can go to the Watchtower or browse at the Wellstock Library. The Watchtower gives a good panoramic view during the day. Noontime and you can see the mahouts giving their elephants a 2-hour bath. Mahout-elephant relationship is never that of man and servant. Mahout must earn the trust of the animal and reinforce the bond daily while bathing it. In the afternoon, you can go out on a jeep or take another elephant ride through non-motorable territory. As darkness falls, you can sip tea in the open while the elephants, now shorn of their howdahs, enjoy the warmth of the fire. Corbett's recent history has produced heroes too. When Subedar Ali survived a tiger attack in which part of his skull was torn away and he had to spend a whole year in hospital, the only request he made to the UP government was that he should be allowed to continue in Corbett as a mahout. Several years after the incident, Ali spoke to us. मैं करीब 9 साल का था जब मैं आया था। इसमें करीब 36 साल के माली में। Since when have you been a mahout? ये चारा कटे का तो काम तो काफी पहले शुरू से चलता था, शौक बहुत था, लेकिन ये करीब 13-14 साल हो गया, लगभग 15 साल माहौत का काम करते हैं जी। बाकी उससे पहले मैं मालीगिरी हमारा भी यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ। अच्छा, मालीगिरी? जी हाँ, करीब 79 में हमें माहौल बनाया गया। Who did you learn from? सब सीखने वाली तो बात यह है कि आप किसी के साथ भी हो जाइए, जैसे कोई जरा उनके साथ हो जाए, लेकिन ऐसा कोई उस्ताद नहीं बना कि जिसके पास मैंने काम किया। लेकिन जहाँ तक दवा दारू का सवाल है, वो किताब देख के ही बात बनती है। और किताब भी देख लिया और फिर उसकी आइडिया ना हो तब भी बेकार, लेकिन थोड़ा बहुत करके एक दूसरे से सब वो सही हो जाए। Wild elephant herds are down from the winter habitat during March-April. We ran into herds of wild elephants inside the forest, and the elephant we ride gets quite close to these. The mahout tries to take our elephant closer to the wild herd. Suddenly, there is a sensation of throbbing in the air, like that from thunder. Elephants talk to one another in a range of sound below that of human hearing. An audible snort followed by sudden synchronous freezing is a warning that we have got too close.
The mahout gets her elephant to withdraw. The herd disperses into the forest. We asked Ali his experience with the elephant in its various moods. हम तो कहीं देखे, लेकिन जैसा यहाँ का हाथी है, ये इससे तो खतरनाक हाथी यहाँ का है, देहरादून का, हरिद्वार का, इससे ज़्यादा खतरनाक का हाथी वहाँ पे। क्योंकि कई बार हाथियों को पकड़ा भी बच्चों को वहाँ पे, तो इसलिए डिस्टर्ब ज़्यादा हो गए वहाँ पे, इसलिए आदमी पे या गाड़ी पे ज़्यादा दौड़ते हैं वो मारने के लिए। बाकी यहाँ का हाथी तो ऐसा अभी तक ना कोई देखा गया है कि या ना ऐसा कोई हादसा ऐसा हुआ कि हाथी को पर अटैक किया हो या किसी पर्यटक को चोट आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। The elephant herd, led by matriarchs who crossed the path of the jeep, seemed to ignore our presence for some time. Soon, it was apparent that the adults were positioning themselves into an attack formation, and we had no option but retreat hurriedly. All the years that you've been living here, you must have experienced the forest at different levels. The romantic, the awesome. वो तो साहब ये थे कि मगर इस किस्म के तो कोई ना कोई से डर वाली तो कोई जंगल में कोई बातें नहीं थी, क्योंकि जब मैं छोटे से जब से जंगल में आना जाना शुरू था तो खौफ तो इस किस्म का बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये कुक्कू हमारे यहाँ एक था, हमारी स्टाफ का ही चारा कट था, उसको शेर ने मार दिया जब 82 में, तो उसके बाद फिर लोगों को खौफ हो गया। तो जब से कुक्कू का हादसा हुआ था उसके बाद जो भी हाथी इधर उधर जब भी कहीं भी जाता तो हाथी को बांध देता अपने पेड़ से। अच्छा। जब चढ़ता था। और उसके बाद फिर हमारा केस हुआ कि 84 में। What happened in 1984? 15 को मैं गया चारे को, तो उसी टुकड़े में गए जहाँ पे कुक्कू को मारा था उसने। अच्छा। ये सबसे पहले वो कुतब नाम का जो लड़का था, उसने कहा यार इसको काट लेंगे हो जाएगा। हमने कहा यार हाँ हो तो जाएगा, लेकिन उसने अपनी हथनी को उसी पेड़ से बांध दिया। हम चले गए, उससे थोड़ा आगे खड़े हो गए, तो हमने उससे कहा कुतब भाई यार कि मैं भी देख लूँ, थोड़ा काट लूँ। हमने कहा काट लो। हम गए तो उसने कहा अगर काटना है तो वो पास में लगा एक पेड़ से उसने बता दिया। मैंने जंगलात वालों का पास जो है कि 4-5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हाइब्रिड सी हो गई है कि अगर कोई करीब चीज़ है तभी कहते हैं बस यही है, दूर है तो यही है। तो हम गए तो करीब था 1-1.5 किलोमीटर पे, मैंने देखा हुआ तो बेचारा तो अच्छा था, काटने लायक तो बढ़िया बढ़ कर था। फिर हमने देखा कि हमारी इतनी कहीं बांधने की जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं दूर नाले में जैसे यहाँ से अमरूद तक है वो इतनी दूरी पे हम बांध दिया नाले में। हम चढ़ गए पैदल आए, बीड़ी पीते हुए ऊपर गए, काट रहे थे। जब हथनी हमारी 1-2 बार बोली तो हमने समझा कि इसके पास चारा खाने को नहीं है, इसलिए बोल रही है। कोई खौफ नहीं कि यहाँ पे शेर हो सकता है या किस किस्म, कोई डर ही से नहीं। खैर कोई बात नहीं, काट के नीचे आ गए, हाथी भी जाके बैठ गए। लेकिन फिर नज़र डाला पेड़ पे तो 2-4 डालियाँ आपस में फंस के ऊपरे रुक गई थी। तो हमने सोचा कि इसको लगे हाथ उतार लाता हूँ। फिर हाथी वहीं बांधा, फिर आए पैदल, फिर चढ़ गए। वहाँ देखा तो मैं पहुँच नहीं पा रहा था उसके। तो हमने सोचा कि एक डाली इसे झुकी हुई थी डाउन की तरफ को, तो हमने उस पर बैठ के हमने सोचा कि एक डाली से मोटा शाखा मार दूंगा ये, तो ये सारा चारा नीचे जाएगा। तो साहब अब इसके बीच के हमने बता सकते हैं क्या हुआ कि एक हम ये पैर दाहिना में लटक रहा था, बाएं पे हम बैठे थे। सोचा कि जैसे लपक के मार दूंगा इसको। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि वो डाली पे कुल्हाड़ी लगे या नहीं लगे, इतने में दाहिने करवट से आया, पकड़ा यहाँ पे और नीचे साथ में ले आया। नीचे वो गिरा, उसके ऊपर मैं गिरा। फिर फौरन उसने हमारे सिर पे हमला किया, जो कुछ करना हुआ। उसके बाद करीब 1-2 मिनट में, और उसके फौरन उसने घसीट के लेके चलता बना एक तरफ। तो वहाँ पे एक सियाल का पेड़ पड़ा था। हमने कहा कि मैं इससे दूर ना जा सकूँ, उसकी मैंने कौलिया भर ली। फिर कौलिया उसका पेड़ पकड़ लिया आपने? उसका पेड़ पकड़ लिया मैंने, क्योंकि पकड़े हुए यहाँ से था। लेकिन उसके मैंने कौलिया उसके भर ली पेड़ को कि ये मसीह से दूर ना जाऊँ। अच्छा, इस